Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the oogenesis. So let's move to the board. So we were discussing gametogenesis. So what is gametogenesis, dear students? This is the process of formation of gametes is called gametogenesis. और डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि गैमेटोजेनेसिस चूँकि दो तरह के गैमेट्स हैं एनिमल्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे, तो दो तरह की फिर गैमेटोजेनेसिस होगी. सो गैमेटोजेनेसिस इट इज ऑफ टू टाइप्स. Spermatogenesis, which we discussed in detail in the previous lecture. And the second category is, and the second type is oogenesis. So spermatogenesis, which we defined in the previous lecture, the process of formation or production of sperms in male gonads. और dear students, male gonads किसे कहते हैं? That is the testes. Is called, this process is called spermatogenesis. इसी तरह से the process of formation or production of egg cell or ovum in female gonads is called oogenesis. और फीमेल गोनेट्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? दीज आर द ओवरीज. सो डियर स्टूडेंट्स, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने डिस्कस कर लिया था इसको डिटेल के साथ. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं oogenesis को. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. So in oogenesis, the cells in ovaries called the germinal epithelium undergo divisions and
and produce follicle। तो आमतौर पर एक से ज़ायद फॉलिकल्स बनते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर हो पाता है, बाकी तमाम फॉलिकल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। सो देयर आर प्रोड्यूस मैनी फॉलिकल्स एंड ओनली one follicle gets mature, remaining are degenerated by a process called follicle atresia। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैच्योर जो फॉलिकल है, इसी से आगे चलकर सारे प्रोसेस होने हैं oogenesis का। तो द फॉलिकल कंटेन्स diploid cells called oogonia। Diploid means they are 2n. Dear students, so the oogonia, dear students, oogonia जो कि डिप्लॉयड सेल्स हैं, ये सारा प्रोसेस ओवरीज के अंदर होगा। क्लियर? सो oogonia अंडरगो divisions and produce diploid primary oocytes। They will give rise to primary oocytes, and they are diploid, means they are 2n. The primary oocytes undergo meiosis 1, the first phase of meiosis, and forms two cells। दो सेल बनेंगे डियर स्टूडेंट्स। वन लार्ज साइज्ड सेल which is called secondary oocyte, and as dear students meiosis 1 हुई है, so it will be haploid, means के 1n। तो इसमें दो सेल्स बने, one large size cell which is called as secondary oocyte and one small sized cell which is called the first polar body। So that will be also haploid। Clear? Now the secondary oocyte
undergoes meiosis II and again forms a large cell called ovum, which is haploid, and a small cell called second polar body. Which will be again the haploid. और dear students, जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, इट मे द फर्स्ट, ये तो हमने meiosis II बताई किसकी, सेकेंडरी oocyte की. द फर्स्ट पोलर बॉडी जो meiosis I में बनी थी, मे और मे नॉट undergo meiosis II. अगर meiosis II में चले गई तो उससे दोनों सेल छोटे छोटे बनेंगे, यानी कि वो भी पोलर बॉडीज ही बनेगी. और अगर नहीं गई तो इससे जो नॉर्मल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, यानी गैमेटोजेनेसिस का, oogenesis का, वो हॉल्ट नहीं होगा. So we are going to draw the flow chart of oogenesis. So this is the first diploid cell which is formed within the follicles. It is called as the oogonium. It is diploid. It undergoes mitosis and forms another cell which is called the primary oocyte. So as there is mitosis, so this cell will be again diploid. तो चूंकि माइटोसिस हुई है तो यहाँ पर भी जो प्राइमरी oocyte होगा वो डिप्लॉयड ही होगा. अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो प्राइमरी oocyte है, इट अंडरगोज meiosis I and it forms two cells. तो यहाँ पर होगी meiosis I and two cells are formed. One large sized cell and one small sized cell. एक बड़े साइज का और एक छोटे साइज का. जो बड़े साइज का सेल है, it will be called as the secondary oocyte. तो dear students, इसको haploid होना चाहिए कि diploid, and this is the first polar body. So as there is meiosis I, so both of them are haploid. And then the secondary oocyte, it undergoes meiosis II the second phase of meiosis, and the first polar body may or may not undergo meiosis II. The secondary oocyte again, it forms a large cell and a small cell. While if the first polar body undergoes meiosis II, it will form two polar bodies. So dear students, this is the ovum
which is haploid. This is the second polar body, which is also haploid, and these are the polar bodies made from the by the division in the first polar body. और ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती. And this ovum, it will finally form the egg cell. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इन पोलर बॉडीज़ का क्या काम है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी जो बनी है, ये छोटे सेल्स, इनका क्या काम है. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने इस तरह का एक बैलेंस रखा है. एक्चुअली बनवाना एग सेल था, तो जब डिवीजन होनी है तो 2 सेल्स तो बनने हैं, एक डिवीजन से 2 सेल्स तो कम से कम बनने हैं. तो जब ये 2 सेल बन रहे हैं तो ज़्यादा हमारे काम का सेल कौन सा है, एग सेल. वो किससे बनना है, सेकेंडरी oocyte से. सेकेंडरी oocyte जो है, इसीलिए जब प्राइमरी oocyte है, इसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी कि डिवीजन होगी, जिसमें एक छोटा सेल बनेगा, एक बड़ा है. ज़्यादा साइटोप्लाज्म इसी के अंदर रह जाएगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर थोड़ा सा रह जाएगा. तो चूंकि डिवीजन भी तो करवानी है और इसके अंदर क्रोमोसोम्स को भी डिवाइड करना है, हालांकि अगर ये इसी तरह से एज इट इज चला जाता तो ये तो डिप्लॉइड हो जाता, तो इसको हैप्लॉइड भी करवाना है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म को भी ज़्यादा रखवाना है. तो इस वजह से अल्लाह ताला ने ये मैकेनिज्म रखा कि सेकेंडरी oocyte को बड़े साइज का रखा और फर्स्ट पोलर बॉडी ये साथ में, जिसे आप कह सकते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट. और बाद में ये जितनी भी पोलर बॉडीज़ बन रही हैं, 3 पोलर बॉडीज़ बन रही हैं डियर स्टूडेंट्स, ये डीजनरेट हो जाती हैं, इनका बाद में कोई रोल नहीं रहता आफ्टर फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, यानी एग सेल स्पर्म सेल के साथ फ्यूज़ कर जाता है, तो तब इनका कोई रोल नहीं रहता, ना फर्स्ट पोलर बॉडी, ना सेकेंड पोलर बॉडी, ना फर्स्ट पोलर बॉडी से बनने वाली दूसरी पोलर बॉडी से. तो ये जस्ट ये है कि एक तो इक्वल क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और दूसरा ज़्यादा साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो इनके अंदर आ सके. और इसी तरह से सेकेंडरी oocyte से ओवम बनना है. ओवम चूँकि आगे चलकर वो वही एग सेल बनेगा, तो एक छोटा और सेल बनाया जिसे अल्लाह ताला ने नाम जिसको हम कहते हैं दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी. तो ये भी बाद में जाकर डीजनरेट हो जाएगी. तो जब इसके बनने का मकसद ये है दैट इज़ द इक्वल division of chromosomes, but there is unequal division of cytoplasm in order to make this cell healthy. Clear? So dear students, hopefully oogenesis भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.